Hello friends, welcome to the fun class number 04 of the video lecture series Probability. In this video, we are going to start a new type of questions from the topic probability, where you will get the questions like how many balls you can draw, how many red balls you can draw from a bag. An uncontains 12 ball of red, blue and white. So in how many ways you can do this, you can do that. So these type of questions we can solve in two ways. Either one is a traditional method and other one is a without formula. No need to use the formula. So I am going to show you how to solve these type of questions without using any formula. Okay, and we'll have the shortcut tricks for this also. Okay, so let's get started. So the first question is, a bag contains 5 black balls, 4 white balls and 3 red balls. If a ball is selected at random, what is the probability that it is black ball? So first question is black ball. A ball is drawn, so एक ही ball निकाल रहे. Okay, so first of all, what will be the sample space for this? For each and every question of probability, you require the sample space. So sample space is nothing but how many total options we have. So 5 black balls, 4 white balls and 3 red balls. So 5 plus 4 is 9 plus 3 is 12. Okay, so we have total sample space is 12. Now see, you are first selecting the black ball. Now tell me how many black balls are there in a container. So in container there are 5 black balls. Yes, there are 5 black balls. In a container there are 5 black balls. So how many options you have for a black balls? So I have total 5 options for a black ball divided by 12. That's it. This is your answer. Yes. So what is the probability is number of favorable options. Number of favorable options. So for one black ball, how many favorable options you have? 5 black balls divided by the sample space. That's it. This is our answer. 5 by 12. Okay. So we using the formula, how you can solve this question is, see, it is 5c1 upon 12c1. Okay. So this is again the 5 by 12. Yes, very good. So answer to this question is 5 by 12. So this we have solved using our shortcut trick, that is without formula. So the answer is 5 by 12. Similarly, on the same line, can you give me the answer to the white balls? How many options you have for white ball is 4 out of 12. That's it. This is the answer for white ball. ब्लैक और रेड बोला है. सो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितने से? 5 ऑप्शन से. सो 5 by 12 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक. रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? सो आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर रेड बॉल. सो इट इज 3 by 12. ओके, और बोला है तो व्हाट वी डू? इट इज ऐड. That's it. So if you add this, you will get 8 by 12 is your answer. Okay, you can simplify this, no doubt. Now fourth question is, what is the probability of getting the green ball? अभी देखो भाई, ये कंटेनर में बॉक्स में ब्लैक बॉल है, व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है. अभी आपको ग्रीन बॉल निकाले. अपने पास तो जादू नहीं है ना कि भाई हाथ डाला और ग्रीन बॉल निकाला, नहीं. सो what is the probability? 0. I don't have any option for the green ball. So it is, the answer is what? 0 by 12, which is nothing but a 0. So let's start our the second question. See, again the important concept पे जा दो, ठीक है. An urn contains 5 red and 3 green balls. Okay, and another urn contains 4 red and 6 green balls. If one ball is drawn from each bag and you are selecting one ball from each bag, find the probability that one is red and other is green. भाई क्वेश्चन के लेंथ पे मत जाओ, ठीक है. डोंट गो ऑन द लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है. जस्ट उसका कंसेप्ट चेक करो. अभी देखो कंसेप्ट है ना, आपका 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा. ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 2 अर्न्स है, कंटेनर्स है. ओके, एक कंटेनर है, उसमें मेरे 5 रेड बॉल्स है एंड आई हैव द 3 ग्रीन बॉल्स, एंड द सेकेंड कंटेनर इज हैविंग 4 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स. Now you are selecting one ball from each container. Find the probability that one is red and other is green. भाई एग्जामिनर ने बोला कि भाई मुझे एक रेड और एक ग्रीन चाहिए.
उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि रेड मुझे फर्स्ट कंटेनर से चाहिए, ग्रीन मुझे सेकंड कंटेनर से चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि आई एम सेलेक्टिंग ग्रीन फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर एंड रेड फ्रॉम द सेकंड कंटेनर। Definitely. So we have here two cases. Either you are selecting red from the first container and green from the second container, or you will pick green from the first container and red from the second container. भाई ये दो ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। ईच कंटेनर फाइंड द प्रोडक्ट दैट वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन बोला है। से वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन, और वन इज ग्रीन एंड वन इज रेड, बोथ आर द सेम, okay, but what is the difference is from the first container we are selecting the red in the first case, and in the second case we are selecting the green. So can you give me the probability for the red from the first container? Okay, first I will write, okay, thoda niche likh de, so green and red, okay। Now what is the probability of getting red from the first container? Red from the first container, how many options I have for red? 5 options, very good। out of 5 plus 3 is 8। अभी भाई सैंपल स्पेस 8 है, डोंट कंसिडर सैंपल स्पेस, ये पूरा सैंपल स्पेस नहीं कंसिडर करना है। यू आर सेलेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, दैट्स व्हाई कंसिडर द टोटल ऑप्शंस इन द फर्स्ट कंटेनर। इट इज 5 by 8, okay, 5 by 8। and green from the second container, how many options you have for green? It is 6 by out of 10। ये and means what you will do, I will multiply, okay। and first container से green निकालो, this is what case 2 where you have or, okay, case 2 where you have or। green from the first container is, how many options I have for green is 3 by 8, and red from the second, red के लिए options कितने, 4 by 10। again they are saying and, okay, so multiply it। so what is your total answer is, you will get either this case or this case, or means what, addition, okay। so your answer will be, it is 5 by 8 and 6 by 10, or 3 by 8 and 4 by 10। so if you solve this, you will get 30 by 80 plus 12 by 80 equals to 42 by 80 equals to 21 by 40। so what is your answer? ये हो गया भाई 21 by 80। you can solve this question with formula also। क्या formula है? combination का। it is 5c1 upon 8c1, it is 6c1 upon 10c1, okay, it is 3c1 upon 8c1, and it is 4c1 upon 10c1, okay। but don't go with the formula, because we have trick, we cannot use the formula in our competitive examinations, okay। so the answer to this question is what, 21 by 40। moving to the next question, an urn contains 5 red and 3 green balls, and another urn contains 4 red and 6 green balls. if one ball is drawn at random, find a probability that it is a green ball। have you observed any difference in this question and the previous? okay, let me show that, observe difference। see भाई अर्न्स तो सेम है, 5 और 3 इसमें है 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स, एंड सेकेंड में है 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। अर्न्स तो सेम है, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर सेलेक्टिंग ओनली वन बॉल फ्रॉम, I don't know which container I am selecting that ball, but the condition is what, that drawn ball should be green ball। what is given is, you have to pick one ball either from 2 containers, and that ball should be green ball, okay। so what will be the cases, okay। so case number 1 क्या बोलता है कि भाई I am first selecting the first container, I am drawing the green ball, I am selecting the first container and I am taking the green ball, or you can do the same thing with the second container, green ball। भाई probability में ना options छोड़ना नहीं है किसी को, we have to consider each and every case। एक बॉल निकाला है, आपको निकालना है, ठीक है, एंड वी डोंट नो फ्रॉम विच कंटेनर, सो भाई निकालो, दोनों में से निकालो, ओके। सो फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर ग्रीन बॉल एंड द सेकंड कंटेनर ग्रीन बॉल, these are the two cases where you will get the total probability of getting green ball from these 2 containers। so let's say, now tell me what is the probability of selecting the first container।
इस कंटेनर को सेलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है आपके पास, ठीक है। इन टोटल you have 2 containers and you are selecting 1 container, so what will the probability is 1/2. Okay, after selection of this container you are picking up the green ball from the same container, means see the sentence will be what, first container and green ball. So what is the green ball probability is 3/8. So this total becomes 3/16 is the total probability of taking the green ball from the first container. ये 1/2 कहाँ से आ गया, ये भाई फर्स्ट कंटेनर को सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, ठीक है। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर योर ग्रीन बॉल। सिमिलरली सेकेंड कंटेनर को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज 1/2 अगेन, एंड ग्रीन बॉल इज व्हाट, इट इज 6/10. So the total probability is what, 6/20. Getting? Now what is the total probabilities? You have or here, or you can pick green ball either from first or from second. So first or second means what, 3/16 or 6/20. Okay, so if you solve this you will get the answer, ठीक है। solve कर लो अपने खुद से। okay, let's see the second next question. An urn contains 5 red, 6 blue and 2 green balls. If 2 balls are drawn at random, what is the probability that both are blue? Okay, consider repeating and non-repeating cases. Very good. अभी देखो इधर ये, this question is again very important question. Okay, so if you are selecting 2 balls, so you have 2 cases. Either, so from this कितना total है अपने पास balls, 5, 11 और ये 13. So we have total 13 balls in a container. Okay, and you are selecting 2 balls at a random. Means what, पहला बॉल निकाला, ठीक है, फर्स्ट बॉल निकाला एंड वापस उसको रख दिया. आई हैव रिप्लेस द सेम बॉल एंड आई एम पिकिंग द सेकेंड बॉल. सो दिस इज व्हाट, रिप्लेसमेंट केस विदाउट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये रिप्लेसिंग चाहिए इधर, दिस शुड बी रिप्लेसिंग एंड नॉन रिप्लेसिंग and non-replacing. Okay, so please make note of that. So what is the replacing is, if I select, suppose if I select the red ball, before drawing the second red ball I should pick or I should insert the same previously drawn red ball in the container. This is what replacing case. Non-replacing case क्या होगा, if suppose I draw a red ball, now for the second red ball देर आर ओनली 12 बॉल्स, ठीक है। ये रेड बॉल तो भाई बाहर निकल गया, अभी इसको रिप्लेस नहीं करना है अंदर, ठीक है। सो फॉर द सेकेंड रेड बॉल आई विल बी हैविंग ओनली 12 ऑप्शंस फॉर मी. गेटिंग? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन रिप्लेसिंग. ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. 5 red, 6 blue and 2 green balls, so n of s becomes 13. Okay, if 2 balls are drawn at random, what is the probability that both are blue? So first of all we'll see this non replacement case. non replacement case क्या बोल रहा है? Okay, so क्या कौन सा बॉल निकालना है आपको? ब्लू बॉल निकालना है. So tell me, for the first blue ball how many options you have? If suppose you are picking one blue ball, how many options you have? For first blue ball I have, sir, 6 options. So 6 options divided by total options is 13. Okay, so with this you will select one blue ball, ठीक है. अभी ये ब्लू बॉल सेलेक्ट किया, कंटेनर से निकाला और बाहर रख दिया, एंड यू विल पिक द अनदर ब्लू बॉल. ओके, अनदर ब्लू बॉल, बोथ आर ब्लू बॉल है, सो अनदर ब्लू बॉल. भाई एक तो ब्लू बॉल निकाल के आपने बाजू में रख दिया. अभी हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर रिमेनिंग देयर? 5 ब्लू बॉल्स आर रिमेनिंग. एंड टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर रिमेनिंग? सर 12 बॉल्स आर रिमेनिंग टोटल. Getting? This concept is the most important concept. You should understand this, how I get this 5 and 12. Okay, so this concept is what we can say is without formula concept. So 6/13 is for first ball and for second ball is 5/12. If replacement case रहेगा तो क्या आएगा आंसर? Now you will be able to solve replacement case. Sir, 6/13 is for the first ball, and if you are selecting the first ball and again you are replacing the ball in a container, again for the second time you will be having 6 blue balls and total 13 blue balls again.
ओके, सो दिस इज व्हाट द रिप्लेसमेंट केस, ये हो गया भाई सेकेंड टर्म के लिए. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज योर आंसर प्रोबेबिलिटी फॉर योर रिप्लेसमेंट केस एंड दिस इज योर नॉन रिप्लेसमेंट केस. अभी फॉर्मूला के साथ कैसा होता है देखो. सो 6c2 डिवाइडेड बाय 13c2, if you open this it will give you the same thing, 1 2 divided by 13 12 divided by 1 2. Okay, 1 2 cancel, 6 into 5 and 13 into 12. ये फॉर्मूला है, ये इसको टाइम जाएगा सर, बहुत टाइम जाएगा, बट इफ यू नो द कंसेप्ट दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, and this is with replacement case. So please make a note of this replacement and non replacement cases. Okay, very good. Isn't these tricks so simple? ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. ठीक है, तो भाई एक बार लाइक बटन दबा दो and show me you like this video. So the next question, an urn contains 5 red ball, 6 blue ball and 2 green balls. If again 2 balls are drawn at random, what is the probability that one is blue and other is green? Okay, in the previous cases 2 balls were of the blue color. Now we have to draw one blue and one green ball. कोई बात नहीं, blue बोलो, green बोलो, red बोलो, कितना भी बोलो, we can draw any number of balls from the container. ठीक है भाई, अभी हमको ट्रिक समझ में आया, so we can give the answer to the any question. Okay, अभी क्या बोल रहे हैं कि one is blue. भाई देखो, अभी फर्स्ट ब्लू निकलना है, फर्स्ट ग्रीन निकलना है, दैट डजेंट मैटर कि भाई निकालने का क्या है, एक ब्लू निकालना है और एक ग्रीन निकालना है, दैट्स इट. ओके, नाउ टेल मी, फर्स्ट ब्लू बॉल इफ यू आर पिकिंग अप, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव फॉर द फर्स्ट ब्लू बॉल? आई हैव टोटल 6 ब्लू बॉल, सो 6 by 13 is the probability for the first blue ball. Okay, in the question they have not mentioned anything about replacement or non replacement case. So in these cases always go for the non replacement cases. Okay, non replacement cases, whenever they have not mentioned anything about replacement or non replacement, directly consider the non replacement case. Now you have picked the first blue ball and you kept it aside. Now again you are picking the green ball. Now how many options you have for a green ball? 2 options. But how many total balls you have? You have already placed one blue ball aside. Okay, now total how many options you have is 12 options I have. That's it भाई, ये हो गया भाई अपना आंसर. दिस इज नथिंग बट 6. ये हो गया फर्स्ट ब्लू बॉल के लिए एंड ये हो गया फर्स्ट ग्रीन बॉल के लिए. ओके, सो इट इज 6 into 13 divided by into 2 by 12. This is our answer. Okay, now tell me, if again in the same sequence if I want to draw second green ball, if I want to draw सेकेंड ग्रीन बॉल, ये तो हो गया भाई फर्स्ट ब्लू बॉल, देन यू विल बी पिकिंग दी ब्लू रेड बॉल, सॉरी कौन सा, ये ग्रीन बॉल, ये ग्रीन है, ये ब्लू है. नाउ थर्ड बॉल शुड बी अगेन ग्रीन बॉल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज, अभी टोटल ग्रीन बॉल्स कितने हैं अपने पास? एक ही ग्रीन बॉल है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन वन ग्रीन बॉल आउटसाइड, 2 बॉल्स है. ओके, 1 डिवाइडेड बाय, अभी हाउ मेनी ऑप्शंस आर रिमेनिंग? इज 11 ऑप्शंस आर रिमेनिंग. ठीक है, अरे यार अभी इसमें कुछ भी ऐड करो, अभी एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें? सो टोटल रेड बॉल्स आर व्हाट? 5 रेड बॉल्स आई हैव. हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? 10 ऑप्शंस आई हैव. सी, once you get the question, once you get the concept, you can solve questions in just seconds. Okay, very good. So you are getting the trick, I hope. Okay, so let's see the next question. An urn contains 5 red, 6 blue and 2 green balls. Now 3 balls are drawn at random. What is the probability that all are blue or all are red? Blue भी चाहिए और red भी चाहिए. All are blue और all are red. Okay, so all are blue की probability कितनी है? 3 बॉल निकालना है. So either you use the formula which is nothing but 6c3 upon 13c3, or you use the concept. How many options you have for the first blue ball? Is 6 by 13 is the first blue ball probability. Second blue ball probability, again non replacement case है, so one blue ball you have already drawn, so the second is 5 by 12. थर्ड बॉल के लिए 4 by 11. ये हो गया भाई ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल्स? तीनों के तीनों रेड चाहिए. ओके, और बोला है, और मीन्स व्हाट? इट इज प्लस.
रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 5, फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इज 5/13 and second red ball it is 4/12 and 3/11. So that's it, this is my total answer. Okay, so it is nothing but 13 into 12 into 11 divided by ये 630 12 120 or you will have V60. So this is your answer. So if you open this 180 and here you will get 315 into 11. Okay, 180 divided by, so I will multiply 156 by 11. Okay, so write down the end terms as it is, 1 and 6 as it is. So answer addition of these two, 5 6 is 111, so 1 carry 1, 5 plus 1 is 6 plus 1 is 7, so 1716 is your denominator, 1716. Okay, please verify the calculations. But what is the concept, what is your final answer is, this should be your final answer. Okay, coming to the next question, an urn contains 5 red 6 blue and 2 green balls. ठीक है, if 3 balls are drawn at random, what is probability at least, आ गया भाई फिर से at least. Okay, 1 red ball, at least means what, total probability minus no red ball. ठीक है, at least means at least 1 red ball बोला है, तो 1 minus no red ball की probability निकालो, you will get the same answer. ओके ओके, चलो भाई 5 रेड 6 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स एंड 3 बॉल निकालने हैं आपको एंड नो रेड बॉल. सो नो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझे एक भी रेड बॉल नहीं चाहिए सिलेक्शन में. हाउ मेनी नॉन रेड बॉल्स आर देयर, सो 6 ब्लू एंड 2 ग्रीन, सो देयर आर 8 नॉन रेड बॉल्स आर देयर. ओके, 8 नॉन रेड बॉल्स आर देयर, नॉन रेड बॉल्स. ओके, नाउ you are selecting the 3 balls. Then what will be the probability for the first non-red ball? It is 8 by how many total options you have? Options, total options remain same, which is nothing but 13. And second non-red ball 7/12. Third non-red ball 6/11. This is what? It is the probability for non-red ball, no red ball. Okay. But what is they are asking is at least 1 red ball चाहिए उनको. So probability of at least 1 red ball is nothing but 1 total probability minus this probability, 8 into 7 into 6 divided by 13 into 12 into 11. Okay, so if you solve this, what answer you will get is 115 divided by 143. Okay, please cross verify. So isn't it so simple? No need to use the formula. Okay, so just use this concept, total options, sorry, number of available options divided by total options. That's it, this will give you the answer. Okay, the next question is, an urn contains 5 red 6 blue and 2 green balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that at most 2 red balls? See, I have taken the same question, that is container same hai, number of balls same hai, drawing selecting the 3 balls is also same. What is the difference is I have taken the different conditions only. Okay, chalo bhai, in the previous question we had the at least condition, now we have the at most condition. At most 2 red ball means what, 2 चलेगा, 1 चलेगा और 0 भी चलेगा, means 0 maximum 2 चाहिए. 3 चलेगा क्या, नहीं सर 3 नहीं चलेगा, I want maximum 2 red balls. I can have 1 red ball or I can have 0 red ball. So this question can be solved like this. So the probability of maximum 2 red balls is nothing but 1 minus probability of getting 3 red balls, all the red balls. Okay, 1 minus probability of all the red balls. Getting? So you can think of like this, इसमें क्या क्या नहीं है सर, 0 1 2 and 3, ये टोटल ऑप्शंस है अपने पास रेड बॉल के लिए. यू कैन पिक 0 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 2 रेड बॉल और 3 रेड बॉल. ओके, व्हाट यू वांट इज आई वांट दीज 3. what you don't want is I don't want this, I don't want this. ठीक है, so that's what I am doing कि भाई 1 में से total probability is nothing but p of 0 1 2 and 3. इसमें से I am subtracting p of 3. I hope you are understanding. In from the total probability I am subtracting a p of 3 which I don't want in the at most case. Okay, so
what will be the answer to this question is probability of at most 2 red balls is equals to 1 minus probability of all red balls, all 3 red balls. ठीक है, so it is 1 minus probability of 3 रेड बॉल है, so फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज 5/13, सेकेंड की 4/12, थर्ड की it is 3/11. Okay, so you will be getting the answer 138 upon 143. Okay, please cross verify, this should be your answer. Okay, so how to remember these two cases, at least and at most? Okay, see here, whenever you have case as a at least one, then your probability is directly equals to 1 minus no. You have to consider 1 minus no condition. At least one red ball बोला है तो 1 minus no red ball की probability you have to take. At most n minus 1 अगर बोला है, what is n is nothing but the number of selections you are doing. So at most n minus 1 बोला है, in that case your probability will be 1 minus all. Okay, now in this question 3 balls are we have to select, so at most 2 bola hai, which is nothing but n minus 1. If it is n, so this will be n minus 1. So if at most n minus 1 cases are there, then you have to consider 1 minus all. Please make a note of this. ओके, इफ़ यू डू दी रेगुलर नॉर्मल मेथड ना भाई, ये तो भाई जाने वाला है 1 से 5 मिनट तक जाता है इसका सॉल्यूशन निकालने के, एंड एट द एंड पता नहीं कि गारंटी नहीं है सही आने वाला है नहीं, बट डेफिनेटली इफ़ यू यूज दिस ट्रिक्स, ओके, यू विल गेट द आंसर विद इन अ मिनट. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट आ जाएगा यार, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. ओके, अभी बोलो मुझे, अगर 7 बॉल्स है अपने पास टोटल, इफ़ यू हैव टोटल 7 बॉल्स एंड इफ आई वांट टू पिक एट मोस्ट 6 balls, at most 6 balls, then what will be the probabilities? 1 minus all 7 balls. This will be the probability of at most 6 balls. Yes, now it's time for a challenge. Take a challenge and try to solve this question. Okay, if you have seen this video till end, you will definitely get the answer, and write down your answer in the comment box. So I hope you like this video. ठीक है, अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे आपको तो एक हिट तो बनता है यार. लाइक करो, शेयर करो, एंड राइट डाउन योर कमेंट्स व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, एंड भाई आंसर भी लिखना मत भूलो. ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू वोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.